Good morning, dear aspirants. Today is 1st of July, and let us start our class today. Yesterday night, Arya ji had sent me question answer related to her optional subject, that is geography. The subject was Elsie Peltier's model of periglacial cycle of erosion being convinced by the geomorphological significance of periglacial process. So this very important question, and Priyadarshini, she had also sent me one question related to how can a backward state in the country minimize to opportunity for transforming framework, policy making framework. So both these question and answers are up to the standard and very good writing, and I really appreciate the dedication of answer writing, and not only the description but the language, the contents, as well as the point. Okay, take for example Priyadarshini's answer. It had covered six answers. Yes, Anjali, good morning. So six topics he has covered in a pre-COVID world. This is the first point. Then supply chains, unemployment, a scale up production, 3 to 5 year policy, and decentralization. So these are the most important points she has described in her answer, and all these points are worth to note. So it's very good answer. As far as Arya Jha has written, that is very descriptive to the point, and she has also shown flow chart. So both the topics, both the answers are up to the standard, and I really appreciate their answer writing practice. It should continue. You may continue it, but before a prelims examination, that is up to yes, Seema ji, good morning. Seema ji, good morning. So you should stop it in the month of August. So in August you should stop it. Rahul Singh, good morning. Yes, Rahul ji, very good morning, and everybody is joining. So today is GS2, that is polity, polity and Indian constitutions. So we will be doing a lot of important questions related to polity. And for your knowledge, this polity, Indian constitution, and international relations, all these important subject segments are in GS2 of the mains examination. So as far as prelims examination is concerned, GS2 plays very important role, and you see the importance because of the fact that a lot of questions, at least 20 to 25 questions, relate to this segment. Now here comes the first question of the day, and I start with the polity segment. The questions are very important. So the most important function of central secretariat, is A, coordination and interpretation of policies, B, framing of legislation and rules, C, budgeting and control of expenditure. Piyush, good morning. Yes, Piyush ji, good morning. So and the fourth one is assisting the minister in policy making. So we have to examine the options, and we have to ensure the correct answer. The most important function of central secretariat. This has been asked, and we have four options: A,
coordination and interpretation of policies, B, framing of legislation and rules, C, budgeting and control of expenditure, and D, assisting the minister in policy making. So, what is your answer? My answer is D. My answer is D, assisting the minister in policy making. So this way we have learnt that the most important function, yes, Anjali, very good answer, very good answer. D is the right answer. So the most important function of Central Secretariat is assisting the minister in policy making, assisting the minister in policy making. Now, uh, a division in the Central Secretariat is put under the charge of this type of questions are asked. A division of the Central Secretariat is put under the charge of A, Joint Secretary, B, Under Secretary, C, Director, and D, Additional Secretary. So what is going to be your answer? Yes. So my answer is C. A division in the Central Secretariat is put under the charge of director. Now, the question which I am going to read is $1,000,000 question. The term civil servant came to be used in the records of East India Company by A, 1760, B, 1756, C, 1772, D, 1765. So, what is your answer? The term civil servant came to be used in the records of the East India Company. Okay, so what is your answer? The term civil servant came to be used in the records of the East India Company by A, this is the option, 1760, B, 1756, C, 1772, and D, 1765. So, yes, the right answer is D, 1765. The right answer is D, 1765. So the term civil servant came to be used in the records of East India Company by 1765. So this way you should learn, and this question very important. Now let us move to some other important MCQs. Which of the following is not a department under Ministry of Personal, Public Grievances and Pension created in 1985? Anand Kumar, good morning. Yes, Anand ji, good morning. So you have to answer it. Which of the following is not a department under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension created in 1985? So we have four options. A, Department of Personnel and Training. B, Department of Personnel and Career Planning. Then C, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. D, Department of Pension and Pensioners Welfare. So, these are the departments. But the B, that is Department of Personnel and Career Planning, this is not there. So B is the right answer. Okay, B is the right answer. Yes, Anjali, correct. So B is the right answer. Now, what is the correct ascending order? What is the correct ascending order of officers in secretariat? 1, Joint Secretary, 2, Deputy Secretary, 3, Additional Secretary, 4, Director, 5, Secretary, and 6, Under Secretary. So you have to write the correct sequence, that is in ascending order. So it is Under Secretary, then comes Deputy Secretary, then comes Director, and then comes Joint Secretary, and then after Additional Secretary, and the last is Secretary. So this is the pattern of officers in ascending order. So this way you have learnt. Which of the following are true of Cabinet Secretary? So Cabinet Secretariat is important,
एंड इसके बारे में आपको ये बताना है कि it operates under the direction of Prime Minister, number one. Two, it came into existence in 1950. Then it is the chief coordinating agency of the Government of India. It helps the Prime Minister in performance of his functions as the head of the government. So, what is your answer? Options are A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 4, C 1, 3, and D 1, 2, 3. My answer is C. 1 and 3 are correct. What is 1? It operates under the direction of Prime Minister. Okay, the Cabinet Secretariat operates under the direction of Prime Minister. Yes, Anandiji, correct answer. Very good, very good. So now, what is the third statement? It is the chief coordinating agency of the Government of India. So the Cabinet Secretariat is the chief coordinating agency of the Government of India. So this way, you have to ensure answering these questions. These questions are very, very important with respect to your upcoming prelims examination. Now, who of the following is the first line supervisor? First line supervisor in the secretariat hierarchy. So, A secretary, B deputy secretary, C under secretary, and D section officer. My answer is D, that is section officer. So, section officer is the first line supervisor in secretariat hierarchy. Secretariat hierarchy. Now, most important question related to this segment is which of the following statement are true about Prime Minister's office, PMO? So, you all know that PMO is the center of the power. So, PMO, something about PMO, we have four statements. First statement is it enjoys the status of a department of Government of India under allocation of business rules. Allocation of business rules. Second, it has a few attached and subordinate offices under it. The third statement, it came into existence in August 1947 by replacing Secretary to Governor General. Fourth, till 1967, it was called the Prime Minister's Secretariat. And after 1967, it is known as PMO, Prime Minister's Office. So you have to find out which statements are correct about PMO. According to me, 1 and 3 statements are correct. Number one statement is it enjoys the status of a department of Government of India under allocation of business rules. And third statement, it came into existence in August 1947 by replacing the secretary to the Governor General. So both these statements are correct. So this way, you have learnt about PMO, that is Prime Minister's Office. Now let us discuss some more important questions related to our polity Indian Constitution segment. And here, please explain point 1. Yes, very good, very good, good question. And this is the explanation. Yes, it enjoys the status of department of the Government of India under allocation of business rules. Yes, there is a there is a book of rules, and that rule is known as business rules. Okay, while you will join the central secretariat, you will find these rules, and while you will go to Labasana for your training, you will be taught the business rules. Okay, so allocation of business rules. This PMO office enjoys the status of department. So PMO is a department in itself. I am very much hopeful that you have taken this point and you have understood, Mr. Anandiji. Now let us move to our most important segment, that is Indian Constitution. So which of the following writs, WRITS, writs is not specifically provided in the Constitution of India? आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिट जो हैं वो भारत के संविधान में नहीं है. A, prohibition, B, mandamus,
quo warranto, and D, injunction. What is your answer? What is your answer? Which of the following rates is not specifically provided in the Constitution of India? A, prohibition. Yes. D is the correct answer. Injunction is the correct answer. Now, which of the following are correct with regard to the functions of UPSC? UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन पर ये प्रश्न है and you have to answer. Just I am going to read the 4 options. Option number 1, to conduct examination of appointments to the services of union. Number 2, to assist states if required in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required. The third statement, to advise the union and state governments on all matters relating to methods of recruitment to civil service and for civil posts. And the fourth statement, to present annually to the president a report as to the work done by it. So we have 4 statements, and what are the codes? A 123, B 134, then C 124, and D 1234. Arya ji, good morning, very good morning. And I have described my comments, okay, regarding your answer. Yesterday night, your question was related to L.C. Peltier's model. So this was your topic, and this relates to your optional subject, that is geography. And I have commented upon, if you will go this video rewinding, then you will be able to listen. So Anand Kumar's answer is 124. Excellent. This is the answer. This is the correct answer, Anand ji. So to conduct examination of for appointment to the services of union, yes, this is correct. And then the second statement, to assist states if requested. If requested, this is the word you should not forget. If requested in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing a special qualification are required. And what is the fourth statement? To present annually to the president a report as to work done by it. Then we have eliminated the statement number 3, and what is that? Let us relook. To advise the union and state government on all matters. Okay, so advisory is not there with UPSC. So let us move to the next important question. Which of the following are not concerns of the UPSC? So this type of question, not okay or incorrect. So you should reread it. What are the options? Number 1, classification of services. Number 2, promotion. Number 3, training. Number 4, disciplinary matters. Number 5, talent hunting. So codes are A 245, B 134, C 13, and D 14. So let me know your answer. My answer is C. 1 and 3 are not concerns of UPSC. What is 1? Classification of services. This is not concern of UPSC. Then 3, okay. Then 3. So and what is 3? Training. So UPSC का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस और ट्रेनिंग से कोई कंसर्न नहीं है. सो आर नॉट कंसर्न्स. दीज आर नॉट दी कंसर्न्स. सो क्या क्या है कंसर्न? दी यूपीएससी का कंसर्न बनता है प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर्स, टैलेंट हंटिंग. सो दीज आर दी कंसर्न्स एंड 2 आर not concerns of UPSC. Now, in which of the following circumstances the president can remove a member of UPSC? UPSC के माननीय सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा. सो वो कंडीशन क्या है? विदाउट रेफरिंग द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट. सो वी हैव ऑप्शंस
One, if he engages during his term of office in any paid employment, यदि वो पेड एम्प्लॉयमेंट पे वो इंगेज हैं outside the duties of his office. Second, if he is adjudged an insolvent. Third, if he is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body. Four, if he becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of Government of India or the government of a state. A 2 3, B 4 only, C 1 only, and D 1 2 3. So my answer is D 1 2 3. Okay. So these are the circumstances in which President of India can remove a member of UPSC without referring the matter to the Supreme Court. 1 2 3 is correct. Let us revisit. Yes, 1 2 3. If he engages during his term of office in any paid, यदि वो अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य पद का लाभ लेंगे जिसमें 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 उन्हें पैसे प्राप्त होते हो, पेड पेमेंट हो. दूसरा, इफ ही इज एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट. और तीसरा, इफ ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस. सो दीज आर दी ओनली 3 situations, conditions. Now the incorrect statement about Central Vigilance Commission. Central Vigilance Commission is a hot topic. Okay, so you should conceptualize it, and we have 5 statements. Number 1, it was set up on recommendation of Administrative Reforms Commission. This is the first statement about CVC, that is Central Vigilance Commission. Now the second statement, it is headed by the Central Vigilance Commissioner appointed by Prime Minister. Third, it functions in certain cases overlap with the functions of UPSC. Then fourth, it is certainly a substitute for an ombudsman. You are well aware with the word ombudsman. ओम्बड्समैन के बारे में जो फिजिकल क्लास हम लोगों का टॉप अचीवर में चला, उसके दौरान मैंने आपसे इसको शेयर किया था. ओम्बड्समैन ये बैंक्स में होता है, और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो लोकायुक्त की अवधारणा है तो उससे ये मिलता जुलता है. मतलब क्या, जो जिनको भी अगर किसी ग्राहक को शिकायत है, किसी बैंक से संबंधित कोई व्यवस्था से संबंधित कोई, या उन्हें कोई ठेस पहुंची है जबकि नियम है और नियम के विरुद्ध जा करके उन्हें वो सेवाएं ये प्रदान, तो इस तरह की जो बातें हैं वो शिकायत प्राप्त करता ओम्बड्समैन कहा जाता है. सो ओम्बड्समैन की ये अवधारणा है, स्वीडन से ये शब्द निकला है. और उसी तरह से क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ओम्बड्समैन के रूप में काम करता है. और नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट रिसीव्स कंप्लेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीव्ड पर्संस. क्या सीबीसी को आप सीधे कोई आम नागरिक कंप्लेंट दाखिल कर सकता है? कोड्स 145, B 124, C 34 and D 345. So what is your answer? My answer is B, that is 1 2 and 4. Okay, it was set up on the recommendation of Administrative Reforms Commission. This is correct statement. It is headed by the Central Vigilance Commissioner appointed by Prime Minister. This is correct statement. And fourth, it is certainly substitute for an ombudsman. So this statement is also correct. So very good, very good. 1 to 4 is the correct answer. Now, which of the following statements are correct regarding the powers of a governor? So governor is also very important topic with respect to the upcoming prelims examination this year, that is 2020. So which of the following statements are correct regarding the powers of governor to reserve a bill for the consideration of the president? And we have only 4 statements. One, it is laid down in Article 200. This is the first statement. It is laid down in Article 200. It is not discretionary power of the government. उनका स्वेच्छाधिकार नहीं है. Third, it is compulsory if the bill endangers the position of High Court. Then the fourth, he can reserve any bill passed by the state legislature. What are the codes? A 1 2 3, B
34, C 13, and D 234. Okay, so the my answer is C, that is 1 and 3. It is laid down in Article 200. Okay, the powers of governor to reserve a bill, to powers of the powers, okay, of a governor to reserve a bill for consideration of the consideration of president. It has been laid down in Article 200. And then third statement, it is compulsory if the bill endangers the position of high court. So these are the different most important points to learn. So the correct statement regarding the difference between pardoning powers of president and governor. So pardoning power, this is also going to be most important topic related to our upcoming prelims examination. So pardoning powers of president और governor के बीच में क्या difference है, ये आपको बताना है. Number one statement, the governor can pardon sentences inflicted by court martial while the president cannot. Second, the president can pardon death sentence while governor cannot. The third statement, the governor can pardon death sentence while the president cannot. And fourth, the president can pardon sentences inflicted by court martial while the governor cannot. So what are the codes? A 12, B 24, C 13, and D 3 and 4. So my answer in this MCQ is B, that is 2 and 4. The president can pardon death sentence while governor cannot. This statement is correct. And fourth, the president can pardon sentences inflicted by court martial while the governor cannot. Yes, 2 and 4, B is the correct answer. Okay, 1 and 3, the governor can pardon death sentence while the president can. This statement is itself, okay, it seems to be very absurd. Okay, then first, the governor can pardon sentences inflicted by court martial while the president cannot. This statement is also seems to be absurd. So both 1 and 3 are not correct. 2 and 4 statements are correct, and I am very much hopeful that you have learned this question very well. Now let us move to the next important question. Which of the following statements are correct with regard to the expenditure charged upon Consolidated Fund of India? So Consolidated Fund of India is most important topic. So we have got 4 statements. Statement 1, it is subject to vote of parliament. Subject to vote of parliament. Second, it is subject to discussion in parliament. Okay. The third statement, it is subject to the vote of Lok Sabha only. ऐसी है क्या बात? And fourth, it is not subject to vote of parliament. So codes A12, B23, C24, and D14. 24, yes, correct. So 24, that is it is subject to discussion in parliament. This is correct. And 4, it is not subject to vote of parliament. This is also correct. It is not subject to vote of parliament. This is also correct. So this way Consolidated Fund of India के बारे में आपने अध्ययन कर लिया, कंसेप्ट बना लिया. What are the major points to learn? It is subject to discussion in parliament, and this is the second statement, and it is not subject to the vote of parliament. So you should learn it. डिस्कशन हो सकता है, वोट नहीं हो सकता है. डिस्कशन हो सकता है, वोट नहीं हो सकता है. So this is constitutional provision. Now which of the following statements are correct? Number 1, parliament can increase a tax. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, parliament cannot reduce a tax. Third, parliament can abolish a tax. So increase, reduce, abolish, ये 3 तरह की बात आ गई पार्लियामेंट के प्रति और दूसरा टैक्स के प्रति. फोर्थ स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस ए टैक्स. सो दीज आर दी स्टेटमेंट्स. एंड कोड A135,
B 3, 4, 5, C 2, 3, 4, and D 3 and 4. So my answer is B 3, 4, 5 statements are correct. What is 3? Parliament can abolish a tax. This statement is correct. Then fourth statement, Parliament cannot increase a tax. Cannot increase a tax. Then fifth statement, Parliament can reduce a tax. इंक्रीज नहीं कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है. इंक्रीज नहीं कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है. The zonal council, this is also most important topic with respect to this year's prelims examination. The zonal councils have been established by, अब 4 options हैं. A, Article 263 of the Constitution. B, States Reorganization Act. C, Zonal Councils Act. D, an order of President of India. So, what is your answer? So, B is the correct answer. States Reorganization Act. Zonal councils have been established by, you should write it if you don't know. So, zonal councils have been established by States Reorganization Act. States Reorganization Act. आज हम लोगों के क्लास का 97th डे है. आप सभी को ये मालूम होना चाहिए. We have started our journey on March 27. मार्च 27 के पहले हम लोग टॉप अचीवर में मिलते थे, वर्ग करते थे, क्लास करते थे, और वहां हमने जो एक एग्जाम्पल सेट किया, तो उसके साथ हम लोगों का ये 97th आज का ये क्लास है. 4 जुलाई को 100वां क्लास हम लोगों का हो जाएगा, और 4 जुलाई को एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. सो बी विथ मी on 4th July and be with me every day. 9:45 is our day. 9:45 is UPSC preparations time. Okay, it should be known as UPSC time. 9:45 UPSC time. So इसको आप संक्षिप्त में अपने साथ बिठा लें, और जहां कहीं भी हो 9:45 में आप हमारे साथ आ जाएं, और हम लोग एवरी डे मेंस और प्रीलिम्स दोनों को अमेलगेमेट करके हम तैयारी कर रहे हैं. वी आर अबाउट टू हिट द सेंचुरी. यस 97. बस अब आनंद जी 3 बॉल है, और एवरी बॉल पे छक्का होगा या एक रन बना करके हम लोग, और इसमें आप सभी की भागीदारी है. एक एंड पे हम हैं और एक एंड पे हमारे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड अदर जो भी जहां से भी हमसे जुड़े हैं. टेक फॉर एग्जांपल गुड्डन कुमार जी, गुड्डन कुमार जी, कंग्रेचुलेशन सर जी, यू आर ग्रेट, क्लास वेरीफाई. यस, ये जमुई से, यस जमुई से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे संचालक हैं, वहां पे ये कोचिंग चलाते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे लोग, पीयूष जी हैं, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री जो कि वॉच करते हैं. बहुत सारे लोग तो वीडियो वॉच करते हैं, और 98 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं. 97 डे है, सब्सक्राइबर 98 हैं, तो दोनों एक साथ सेंचुरी हो रहा है. 4 जुलाई के पहले निश्चित रूप से 2 सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे, नहीं होंगे ऐसा मुझे विश्वास नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, आप सभी के लिए, और ये उपलब्धि में 4 चांद तब लगेगा जब आप 5 जो हमारे एग्जामिनी हैं, जो इस साल प्रीलिम्स में जा रहे हैं, आनंद कुमार, शौर्या कुमार, स्प्रिया जी, प्रियदर्शनी जी और आर्या झा जी, आप पांचों के पांचों सफलता के शिखर तक पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And this is, which of the following are federal features of Indian Constitution? भारत के संविधान का जो संघीय स्वरूप है, उसको इनमें से कौन, स्टेटमेंट क्या है? Let us read. 1, rigid constitution. 2, bicameral legislature. 3, office of CAG, Controller Auditor General of India. Then 4, collective responsibility, और 5th, office of governor. तो ये किसके द्वारा, कोड क्या है? A 1 2 3, B 1 2 5, C 1 2 3 4 एंड D
D12. D12. So D is my answer. Okay. Rigid constitution and bicameral legislature. These are the two things जिससे फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साबित होता है. यस आनंद जी, यू आर राइट, करेक्टली आंसर्ड. सो डी इज द आंसर. ऑफिस ऑफ सीएजी से कोई मतलब नहीं है. दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नहीं है. ऑफिस ऑफ गवर्नर फेडरल से इसको भी कोई मतलब नहीं है. बट पॉइंट नंबर 1 and 2 दे रिलेट विथ फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now, some more questions. The present relationship between the president and council of minister. Okay, this is also hot topic. The relationship between president and council of ministers. So, this relationship is governed by the provisions of. आपको ये बताना है कौन से प्रोविजन से ये गवर्न होता है. राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के बीच संबंध का. मंत्री परिषद. ए 42nd अमेंडमेंट 42वां संशोधन, बी 48 48वां संशोधन, सी 54 अमेंडमेंट एंड डी 44 अमेंडमेंट. सो माय आंसर इज डी. माय आंसर इज डी. 44वें संविधान संशोधन से अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गवर्नड होता है. सो इस तरह से आपने इसको देखा. नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन. अब फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा कंसेप्ट बना लें. वी हैव 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन. स्टेटमेंट 1, it is to act as the balancing wheel of Indian fiscal federalism. Second statement, it consists of a chairman and 3 other members. Third statement, qualifications of the members of commission are determined by president. Fourth statement, it is constituted under the provisions of article 280. Finance commission is constituted under the provisions of 280. Now codes A 234, B 23, C 14 and D 123. My answer is C, that is 14. Okay, it is to act as balancing wheel of Indian fiscal federalism. And fourth, it is constituted under the provision of article, yes, 14 is the correct answer. So this way we have seen a lot of questions related to Indian constitution. And now let us see one more question related to the emergency provisions. Which of the following will be consequences of declaration of national emergency by the president? Now we have 4 options. Option number 1, the president can issue directives to the state executives. You have to examine this statement and you have to simply find which statement is correct. Second statement, the president can extend the normal tenure of Lok Sabha. Class seems empty today. I don't know why. Okay, but it happens. और इसमें हमारा क्या कमेंट हो सकता है? I have to labor hard. यदि क्लास में कोई भी नहीं रहेगा तो ये मेरा सेशन चलेगा. ओके, सो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं. कोई आकस्मिक आवश्यकता आ सकती है तो इसके चलते उपस्थिति नगण्य हो सकती है. सो हम लोग को इसको देखना है, पढ़ना है. सो आई एम हियर सर. यस, आप बिल्कुल हैं. और आप ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं. एवरीबडी इज हियर विथ मी. सो हमारे पास संख्या यहाँ पे आ रही है. यस, राइटिंग क्वेश्चन आंसर सर. आई एम राइटिंग क्वेश्चन आंसर. ओके. जो यस, योर क्वेश्चंस, वेरी गुड. और यहाँ पे तो उपस्थिति बता रही है. कुल हमारे साथ 22 लोग हैं, 22 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो ऐसी बात नहीं है. सो मेनी पीपुल आर विथ मी. अब कौन लोग हैं, कहाँ हैं, जहां कहीं भी है उनको शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है. माई मिशन इज हमारे टॉप अचीवर के 5
जो एग्जामिनी है उनको यूपीएससी क्रैक कराना है, लबासना भेजना है, और दे हैव टू प्रूव दैट दे आर द बेस्ट सिविल सर्वेंट्स ऑफ आवर कंट्री। ये हमारा मिशन है। तो रिटायरमेंट के बाद हमने बस इस मिशन को अपनाया है, और देवघर जैसे छोटे जगह से अगर ये 5 सितारे वहां तक पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इस उपलब्धि के साथ आत्मबल आत्मविश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। जो कुछ भी होता है उसको होने देना है। लेकिन द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, एंड फोर्थ द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द distribution pattern of financial resources between center and states. So what are the codes? 1, 3, 4, B 1 and 4, C 1, 2, 3, 4, and D 1, 2, 3. So my answer is 1 and 4. My answer is 1 and 4. The president can issue directives to the state executives. This is correct statement. And the president can modify the distribution pattern of financial resources between center and states. This statement is also correct. This statement is also correct. Now, अब छोटे छोटे प्रश्न हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जो जिन प्रश्नों के सहारे आप अपने नॉलेज को बिल्कुल इन्हांस करेंगे, और आपके नॉलेज में 4 चांद लगेगा। और वे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। आप देख, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आपके सामने लाने वाले हैं। व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, एंड एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट एंड प्लीज आंसर। अब मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी तक मैं आंसर आपको बता रहा था। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और तुरंत आपको आंसर देना पड़ेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 2005, B 2006, C 2004, D 2008. What is your answer? A, B, C, D. Okay, बताएं तुरंत। A is the correct answer. तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। The total number of fundamental duties mentioned in Indian Constitution. A 11, B 9, C 13, D 6. What is your answer? Yes, be quick. जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आए। आनंद कुमार जी 5 no, the total number of fundamental duties is 11. A is the correct answer. Yes, 11. A is the correct answer. Now next question, which of the following high courts exercises jurisdiction over Andaman and Nicobar? A, Mumbai High Court, B, Calcutta High Court, C, New Delhi High Court, D, Andhra Pradesh High Court. What is your answer? Yes, what is your, yes, Anandiji, 2005 correct regarding RTI. Now here is the question related to High Court's jurisdiction over Andaman Nicobar. The options: A, Mumbai High Court, B, Calcutta, C, New Delhi, D, Andhra Pradesh. What is your answer? Mumbai. No, it is Calcutta. It is Calcutta. Correct yourself. The jurisdiction of High Court over Andaman and Nicobar is B. That is Calcutta High Court, right? Calcutta High Court. Yes, Calcutta High Court is the correct answer. Now let us move to the next question. Who appoints the Attorney General of India? Who appoints the Attorney General of India? Option A, President of India, B, Prime Minister, C, Chief Justice of India, D, Vice President of India. What is your answer? Quick answer बताएंगे. So the answer is A, President of India. The answer is A, President of India. Attorney General of India को Prime Minister नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ए विलेज पंचायत? दिस क्वेश्चन इज वेरी यस प्रेसिडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ए विलेज पंचायत? विलेज पंचायत को फॉर्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 48, D article 78. So what is the correct answer? What is the correct answer? What is the correct answer? So the correct answer is yes, article 40. आप इसको लिख लीजिए। Which article of the Indian Constitution directs the state government to form a village panchayat? So it is article 40. Article 40.
Which article of Indian Constitution provides for election commission? Yes, 40 इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? A 323, B 324, C 325 and D 378. What is the correct answer? What is the correct answer? इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल 324 है, याद कर लीजिए मेरे साथ, कंसेप्ट बना लीजिए. The right answer is B, that is 324. The next question, who chairs the session of राज्यसभा? राज्यसभा के सेशन का, यस 324, वेरी गुड. राज्यसभा के सेशन का की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट. वीपी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन. कलेक्टर का पद कब क्रिएटेड हुआ था? ए 1772, बी 1779, सी 1792 एंड डी 1882. व्हाट इज योर आंसर? जिस पद के लिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में सवाल. द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन ए 1772. 1772 इज द राइट आंसर. 1772 ए इज द करेक्ट आंसर. 1772 में कलेक्टर पद को क्रिएट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के अंतिम डिप्टी चेयरमैन कौन थे? ए सी रंगराजन, बी मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सी रघुराम राजन, डी मनमोहन सिंह. सो व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? यस, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के आखिरी जो डिप्टी चेयरमैन थे वो थे बी मोंटेक सिंह अहलुवालिया. मोंटेक सिंह अहलुवालिया, यस अहलुवालिया, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड. प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? ए 1973 1973, बी 1976, सी 1978, डी 1983. व्हाट इज योर आंसर? यस आनंद जी, वेरी गुड. व्हाट इज योर आंसर? नाउ answer this question. Project Tiger was launched in. So my answer is A 1973. Please note it. Yes 1973 Tiger, Project Tiger launch किया गया. Next, fascism believes in the application of the principle of. fascism किस चीज से संबंधित है? A dictatorship, B democracy, C utilitarianism, D totalitarianism. So what is your answer? What is your answer? A dictatorship, B democracy, C utilitarianism, D totalitarianism. So D is the right answer. Yes, D is the right answer. Totalitarianism, fascism, totalitarianism से संबंधित है, उस सिद्धांत पर आधारित है. The next question, the Sindhi language was included in 8th schedule of the Indian Constitution in which constitutional amendment? किस संविधान के संशोधन से सिंधी लैंग्वेज को भारत के 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? ए 10th, बी 12th, सी 18th एंड डी 21st अमेंडमेंट. सो व्हाट इज योर आंसर? माय आंसर इज डी, दैट इज 21st अमेंडमेंट. 21वें संविधान के संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान के संशोधन के द्वारा सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल. इन 8th शेड्यूल. कुछ लोग क्षणय रुष्टा क्षणय तुष्टा हो जा रहे हैं. एक क्षण में रुष्ट. 1975 1975 क्या होता है? ए रूल ऑफ फ्यू, रूल बाय फ्यू, बी ये इसमें आंसर क्या है? व्हाट इज योर आंसर? ऑटोक्रेसी मींस एब्सोल्यूट रूल बाय वन. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. constituted by under article 280. ये मैंने ये कर लिया. बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसके अंडर में है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी प्रेसिडेंट. माय आंसर इज डी, दैट इज प्रेसिडेंट. फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280. नेक्स्ट, how many members are nominated by the president in Lok Sabha in India? So राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? नॉमिनेटेड. सो A 2, B 3, C 4, D 5. My answer is 2 and your answer is also 2. 2 ही सदस्य को
नामित किया जाता है. सो 2 इज द आंसर. सो yes, 2 is the correct answer. Now यस, ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं. जो दी प्रेजेंट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब सवाल तो एसएससी का है. फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, यस, जो एफआर है फंडामेंटल राइट, वो भारत के संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट ए, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. सो ए बी सी डी, व्हाट इज योर आंसर? माय आंसर इज पार्ट 3. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, बी इज द राइट आंसर. अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है. ये थोड़ा आसान था, आपको एनर्जाइज करने के लिए ये सब क्वेश्चन मैं ला रहा था. अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न आपके सामने मैं लाता हूं, उस पे आप ट्राई करें. द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? हियर आर द ऑप्शंस. ए स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, बी एवी अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, डी हग गैट्सकल, HUGH. सो व्हाट इज योर आंसर? क्या है? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? माय आंसर इज सी, दैट इज लॉर्ड पेथिक लॉरेंस. आपका भी यही आंसर होना चाहिए. सी इज द करेक्ट आंसर. और यदि नहीं जानते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन. ओके, इट इज गोइंग टू इनहांस योर नॉलेज. ये आपके ज्ञान को अभिवृद्धि करेगा, बढ़ाएगा और एग्जाम में मदद करेगा. लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन टू इंडिया. और ये भी आप जानते होंगे कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है. यस, वेरी गुड आनंद जी. नाउ ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया? ए द गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. माय आंसर इज सी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान को, भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया. सी इज द करेक्ट आंसर. यस, आर्या जी, अंजलि, आनंद जी, ऑल करेक्ट. वेरी गुड. एंड ऑल ए फॉर अंजलि, ए फॉर आनंद जी एंड ए फॉर आर्या जी. Very good, very good. All A are with me. So, next, the Constituent Assembly for Undivided India first met on A 6th December 1946, B 9th December 1946, C 20th February 1947, D 3rd June 1947. Okay, so what is your answer? The Constituent Assembly for Undivided India first met. ये कब इसकी बैठक हुई? सो बी इज माय आंसर. 9th December 1946. दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was, जब दूसरी बार जो डोमिनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 के अक्टूबर में बैठी, उस समय इसके मेंबर क्या थे? ए 299, बी 311, सी 319 एंड डी 331. 299 is my answer. A is my answer and your answer should be 299. Now, who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? अब ये आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ए डॉक्टर बी एन राव, यस, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी के एम मुंशी एंड डी एम सी सेटलवार्ड. सो द आंसर इज ए डॉक्टर बी एन राव. तो ये आपको याद कर लेना चाहिए और नोट भी कर लीजिए नोटबुक में. डॉक्टर बी एन राव वाज द constitutional advisor to the Constituent Assembly. Okay, so the Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly setup. कौन सा सेटअप था? A under the Indian Independence Act 1947, B
under the cabinet mission plan 1946, C through a resolution of provisional government, D by the Indian National Congress. So my answer is B, under the cabinet mission plan 1946. Okay, Constitution of India was enacted by Constituent Assembly set up. So ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत था, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. द कंस्टिट्यूएंट असेंबली Constitution for Independent India was set up in 1945, 1946, 1947 and 1949. My answer is 1946 और आपका भी ये आंसर है, मुझे पूरा विश्वास है. लेकिन इसका आंसर जरा दीजिए. Who presided over the inaugural meeting of Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India का जो इनॉग्रल मीटिंग, दैट इज द फर्स्ट मीटिंग, उसको कौन प्रेजाइड किया, उसकी अध्यक्षता कौन किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पी उपेंद्र. सो आप बताएंगे. ए इज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय सच्चिदानंद सिन्हा. एसएन सिन्हा, एसएन सिन्हा वाज प्रेजाइडेड. Yes, Sinha. Very good, very good. So, Anand ji, please correct yourself. Yes, A is the answer. Sajdanand Sinha. Who among the following was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? ये पूरा का पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रिवाइज करा रहा हूं. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी, डी बी आर अंबेडकर. D is the answer. Yes, D is the correct answer. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee. How long did Constituent Assembly take to finally pass the constitution? So, कितना समय लगा? A about 6 months in 1949. B exactly a year since November 26, 1948. C about 2 years since August 15, 1947. D about 3 years since December 9, 1946. D is my answer. D is my answer because लगभग 3 साल लगा संविधान बनाने में. दिसंबर 9, 1946 से संविधान बनना शुरू हुआ. Who was the president of Constituent Assembly? Constituent Assembly का प्रेसिडेंट कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी सी राजगोपालाचारी. So B is my answer. B means Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. Now, demand for Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at. ये बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहां पे हुआ था 1936 में. ए कानपुर, बी बॉम्बे, सी लखनऊ, डी लाहौर. So C is the answer. Lucknow is the answer. The demand for Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936. The Constituent Assembly arrived at decision on various provisions of the Constitution. A by a majority vote, B by a 2/3 majority, C by consensus, D unanimously. So Constituent Assembly ये इसमें जो आंसर है बाय कॉन्सेंसस. यस, बाय कॉन्सेंसस. सी इज द राइट आंसर. द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय ए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. तो मेरा मानना है सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे अधिक, अगर आप 1935 को पूरा बारीकी से पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा लगभग भारत के संविधान में समाहित हो कर दिया गया है. सो नाउ इट इज टाइम टू टेक यस. अब इसके बाद जो कुछ भी हमारे पास प्रश्न है वो सारे प्रश्न बहुत ही जो इंपॉर्टेंट एरियाज के हैं, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में
हम लोग देखेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो करेंट अफेयर्स है वो अगले क्लास में हम इसको आपको बताएंगे। उस पे हमने पूरा का पूरा राइटअप तैयार कर लिया है। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं इस एक साल के दौरान, बिकॉज यूपीएससी की पिछली परीक्षा से लेकर के आने वाली परीक्षा तक की अवधि के बीच का जो पीरियड है उसमें जो अंतरराष्ट्रीय जगत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कॉन्फ्रेंसेज हुए, जो बायलैटरल रिलेशंस हुए, जो ट्रेड पैक्ट्स हुए, जो मिलिट्री ये लेकिन वो अब मेरा डिसीजन हो चुका है।